Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be reacting to the Sanskrit Iceberg Explained video by India in Pixels. This video is highly requested of me for the longest time, well, for the past month. Many people have said, hey, please react to this video. And I've always said, yeah, sure, it's on the list. I'll get to it. I'll get to it. I'll get to it. And guess what? I haven't got to it until finally someone yesterday is like, hey, I've been asking like every video, can you please react to this? And I was like, okay, you know what? Fine. You know what? Fine, we'll do it. We'll react to the the Sanskrit Iceberg Explained video. The Sanskrit Iceberg Explained goes into facts about Sanskrit, first the basics and then gradually the deeper esoteric ones. We look at the mysterious Sanskrit facts swimming in the deep waters. So let's dive in. Wow, he's really setting the tone there. The video was fun to make, and if you enjoyed it, like it. If you enjoyed it, like, comment, and subscribe with notifications on. Yes, of course. The link to this video will be in the description down below, so make sure to go and watch it. Make sure to go subscribe. Give it a thumbs up, the whole shebang. Become a member of their channel. I'm a member of the India in Pixels channel, so I recommend you guys be a member as well. Pretty cool. Pretty dang cool. So anyways, let's get into it, man. Let's get into it. Hello, friends. How are you all doing? अहो मित्राणि कथं भवन्ति सर्वे अस्माकं यूट्यूब चैनल इंडियन पिक्सेल्से भवतः स्वागतमस्ति अद्य वयं संस्कृतस्य रोचकत्वानि तथ्यानि अन्वेष्टुम् आरब्धुं भवतः सज्जा किम् Am I ready? I'm ready. I'm ready. I'm ready to learn. I'm ready to learn. I love learning. I love learning about history. I love learning about languages. I love learning about culture. I'm ready to learn. I'm expecting a lot. I'm expecting greatness. I'm expecting something grandiose and amazing. Yum. Wow. This is great. तो दोस्तों जैसा कि That was आपने that was a great opening. That was awesome. फिगर आउट कर ही लिया होगा आज हम बस एक भाषा के बारे में बात नहीं करने वाले हम एक सभ्यता की फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ देव भाषा संस्कृत के बारे में बट चिंता मत करो ये वीडियो कोई बोरिंग एनपीटीएल का वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला हम There's a few videos like this that people have recommended to me, and it's like, all right, listen, I enjoy learning about things, but if it's like a very dry like classroom setting or like I don't know, just I don't know, it's just I like a video with I like videos with less edits, but not to the point where it's just like, okay, they set up a video camera in a classroom, right? Like that's a little हम संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं with a fun new twist in an iceberg format. The iceberg format is जिसे very fun fact popular. संस्कृत में कहा जाता है हिम स्तंभ. Huh. Him stum? Ice pillar. Him stum. हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप फैक्ट्स जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो फैक्ट्स जो मोस्टली सबको पता होता है और फिर धीरे धीरे करके हम जाएंगे डीप अंदर ऑफ द समंदर जहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स जो कि होपफुली आपका दिमाग हिला What is this? के रख देंगे सो चलिए Why the without weird much demonic ado, baby? Also, Brazil mentioned. सो चलिए Shout out to all my Brazilian fans out there. We got Brazil mentioned. without much ado Above the water. So these are probably things that I know even with my limited knowledge. I probably know these. Hopefully, maybe I don't. Maybe I'm in for a huge surprise and I don't know anything. पहला फैक्ट है कि संस्कृत इज रेयर बट इट इज एवरीवेयर Okay, yeah, I know that. 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में बस 25,000 से कम लोग हैं Sanskrit speakers. Only 24,000 Indians identified as Sanskrit speakers. Sanskrit speakers?
जिनकी मातृभाषा संस्कृत है। ये नंबर्स इतने कम होने के बावजूद संस्कृत का छाप सब तरफ है। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत हम पाते हैं हमारे करेंसी नोट्स में, हमारे नेशनल एम्बलम में, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लोगोज में। इनफैक्ट हमारा नेशनल एंथम भी संस्कृताइज्ड वैरायटी ऑफ बंगाली है और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वो तो पूरा है संस्कृत में। इंडिया में जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं वी से नमस्ते। दिस वर्ड आल्सो इज अ संस्कृत वर्ड। देयरफॉर संस्कृत इंडिया के ब्लड स्ट्रीम में बसा हुआ है। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट फैक्ट। I knew that one. Mother of all languages? फैक्ट ये है I know some people would disagree with this, especially like when we're talking about like the Tamil people. They'll probably disagree about it being the mother of all languages. Because isn't like Tamil, its origin is even older than Sanskrit, right? I don't know. है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। Many. Oh, wow, he got me. He got me. He knew the type of person that would pause and talk like me. He got me. भारत के टॉप 120 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस की लिस्ट में 78 की ऑर्डिनेट संस्कृत से ही है। कई सारे भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, ओडिया, पंजाबी, अवधी, गुजराती, असमीज, इन सब का बर्थ संस्कृत से हुआ था। दूसरे लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम संस्कृत से डायरेक्टली इमर्ज तो नहीं हुए, बट संस्कृत का इन पे एक डीप इम्पैक्ट रहा है। They have like loan words, right? इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा में बोले जाने वाली जावानीज लैंग्वेज में भी संस्कृत का हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम है द गरुड़ पंचशील, जिसके नीचे लिखा होता है इंडोनेशिया का मोटो भिन्नेका तुंगलिका, जिसका मतलब है कि भिन्नता में ही एकता है। प्रीटी सिमिलर टू संस्कृत, नहीं? Seems like it, yeah. तीसरा फैक्ट, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है which belongs Classical Indo-European language. There's another video that I've been meaning to react to. Where is it at? It's down here somewhere. I'll know it when I see it. It's got a man on it. Not descriptive, I know, but right here. Every English, or the origin of every no, that's not that. Right here, Tracing English as Far Back as Possible by Rob Words. I've had this in my list for like, I don't know, nearly the whole 4 months the video has been out. And yeah, like from what I've seen, it like it goes all the way back to like a Indo-Germanic language, and that's like connected to like Sanskrit in a way. So yeah, anyways. to the Indo-European language family. संस्कृत को लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, पर्शियन और मैंड्रिन की तरह एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, यानी कि ये एक बहुत पुरानी भाषा है जिसका एक बहुत बड़ा लिटरेचर भंडार है। मजे की बात लेकिन ये है कि संस्कृत इंडिया की दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज है। पहली थी एनी गेसेस? तमिल। संस्कृत also belongs to the Indo-European language family. Okay, I kind of want to take a look at this. Language families: Romance, Germanic, Slavic, Baltic, Celtic, Iranian, Indo-Aryan, Albanian, Armenian, Greek. फैमिली एक बहुत बड़ी डाइवर्स फैमिली जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है और इंग्लिश भी, ओडिया भी और पोर्तुगीज भी। मतलब कि इटालियन और भोजपुरी चचेरे ममेरे भाई बहन टाइप के ही हैं। इनफैक्ट क्या तुम्हें पता है कि द होल फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स का इमर्जेंस हुआ था जब कुछ अंग्रेजों ने नोटिस किया कि भाई उनकी यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत में कितने सारे पैरेलल्स हैं। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे लिथुआनियन और संस्कृत में भी बहुत सारे पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं। Sanskrit and Lithuanian. Sunus. Vyras, Virkas, Vilkas. Tava, Tavo. Pada, Pėda. Agni. Ugnis. That's pretty cool. That's pretty awesome. I find that really fascinating. We're on fact 4. Finally, the last fact of our first tier. संस्कृत दुनिया की one of the rarest languages है जिसमें dual case होता है, यानी कि द्विवचन। इंग्लिश और हिंदी में जैसे इनको बोलेंगे one horse, two horses, many horses।
What is this? One horse, two horse, mini horse? I've never heard of this. हिंदी में एक घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े. Notice that dual and plural are treated the same. एक Oh, और I हिंदी में see. जैसे इनको बोलेंगे one Let horse. me go back. Let me go fact back. of our first tire. संस्कृत दुनिया की one of the rarest languages है जिसमें dual case होता है. Dual यानी कि case. द्विवचन. इंग्लिश और हिंदी में जैसे इनको बोलेंगे one horse, two horses, many horses. हिंदी में एक घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े. Notice that dual and plural are treated the same way. लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता. संस्कृत में it is एकः अश्वः, द्वौ अश्वौ and बहवः अश्वः. Notice how two and plural are treated differently. Fun fact, दुनिया के बहुत सारे languages में ऐसा dual case होता था. But समय What is this? What is this thing that he chose? This what was that in the Fun fact, background? दुनिया के बहुत सारे languages में ऐसा dual case होता था. But समय के It's distracting. Is that like How I Met Your Mother or something? It looks like the actress from that. Or is that some? No. Is this? Is that the which one? God, I can't remember what the show is called. I don't watch enough TV. dual Never case mind. I'll just होता ignore था, it. but समय के साथ ये विलुप्त हो गया. For example, Okay. ancient Greek में एक singular person को बोलते हैं anthropos. दो व्यक्तियों को anthropo और अनेक व्यक्तियों को anthropy. Similarly, Anthropy. Slovenian में एक घर is ena hiša, दो घर are dve hiši और तीन घर is tri hiše. Crazy बात तो ये है कि English में भी एक टाइम पे dual case मौजूद था. For example, for two of us, you would say wit, and for many of us, you would say we. That's the old English. That's the old English. They don't really have that anymore. Actually, the closest to this like old English still in existence you could find in a lot of the ways that people speak in like the deep Appalachian Mountains here in the U.S. Therefore, Sanskrit is one of the fewest languages जिसमें ये difference अभी तक बरकरार है. तो दोस्तों, that was all very common basic knowledge. अब चलते हैं हमारे आइसबर्ग के दूसरे लेवल पर. पानी के जस्ट नीचे गीले करते हैं अपने पैर with some more advanced Sanskrit facts. लेकिन उससे पहले I probably won't know. I probably won't know any of this going forward. India in Pixels is back with another Brand new course. Introduction to Data Whoa. Storytelling. 2 साल पहले हमने लॉन्च किया था Introduction to Data Visualization का live cohort, and I'm happy to share a new advanced improved version of that course is back here again. First of all, I Interesting. think you're an excellent teacher, and you should, no matter what you do in life, you should always be a teacher. You are brilliant. 255. Yeah. It's becoming more like Germany's flag, isn't it? Yeah. This is exactly what data visualization is. इस कोर्स में आप सीखेंगे कि डेटा के साथ हम काम कैसे करते हैं और उसे एक कहानी के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं. चाहे आप जर्नलिज्म में हो या बिजनेस में, सेल्स में या मार्केटिंग में, टेक में या डिजाइन में, ये कोर्स हर फील्ड के लिए यूजफुल है. एंड सबसे अच्छी बात, इसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको. प्री रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है और हाँ, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है. फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे संस्कृत आइसबर्ग की तरफ. तैयार हो Just level below 2 the water. के लिए? I चलो, won't know शुरू any of करते हैं. this. I probably won't. फैक्ट नंबर 5. द 4 वेदास. 1500 BC से 500 BC के बीच का समय को कहते हैं वैदिक काल. इसी टाइम पे वेदों की रचना हुई थी. पर वेद एग्जैक्टली हैं क्या? वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान या विजडम. wisdom, ये आता है फ्रॉम द knowledge. रूट विद, जहाँ से हमें मिलती है. वेद शब्द का मतलब होता है That literally means knowledge or wisdom. ज्ञान या विजडम. ये आता है फ्रॉम द रूट विद, जहाँ से हमें मिलता है I knew विद्या. that. जनरली सबको पता होता है कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. ऋग्वेद काफी सारे की वैदिक गॉड्स के प्रेजेस के ऊपर है. यजुर्वेद रिचुअल्स और सेरेमनीज पे फोकस करती है. सामवेद ऋग्वेद की मंत्रस को म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करती है. और अथर्ववेद मेडिसिन, रेगुलर सेरेमनीज एंड कुछ मिस्टीरियस पावर्स को डिस्क्राइब करती है, लाइक कॉन्करिंग योर एनिमीज और प्रोटेक्टिंग योर फ्रेंड्स फ्रॉम अ स्नेक अटैक. चलो Cure of snake poison? Is that what that said? Cure of snake poison. चलो ये तो सबको पता होता है. बट व्हाट इज लेसर नोन इज दैट हर वेद के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. Samhita, know this. meaning the actual text with the mantras and the hymns. Brahmanas, which have the rituals and ceremonies के explanations. Aranyaks, जो कि forest treaties होते हैं, focusing on meditation and philosophy. And finally, the Upanishads, the last components of the Aranyaks, which have pure, deep philosophical discussions about the ultimate reality.
इंटरेस्टिंगली कुछ हिंदू मानते हैं कि वेद एटर्नल हैं और ऑथरलेस हैं, मतलब ये नॉलेज हमेशा से एग्जिस्ट करती है। एक और एक्सप्लेनेशन है कि जब ऋषि मुनि अपने डीप ध्यान स्टेट में यूनिवर्स को फेस करते थे तब उन्हें जो रिवलेशंस प्राप्त हुई वही वेद है। हर वेद का ना अपना एक एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल होत्रीज बेस्ड ऑन द ऋग वेद का काम होता है गॉड्स को प्रेज करना ताकि वो यज्ञस में इनवाइटेड फील करें। अध्वर्यु बेस्ड ऑन द यजुर्वेद हु आर लाइक द होत्रीज असिस्टेंट्स, जो कि यज्ञ के सारे रूल्स एंड कस्टम्स में माहिर होते हैं। फिर उद्गता बेस्ड ऑन द सामवेद, जो कि सॉन्ग्स और मेलोडी से यज्ञ का एक वाइब क्रिएट करते हैं। एंड फाइनली द ब्राह्मण्स बेस्ड ऑन द अथर्ववेद, जो कि पूरे यज्ञ के संचालक से होते हैं। ये डिवीजन ऑफ प्रीस्टली फंक्शंस हमें यूरोप के सेल्टिक कल्चर में भी दिखता है, जहाँ पे ड्रुइड्स आर लाइक द हाई प्रीस्ट्स लाइक द होत्रीज एंड द अध्वर्युस, द बार्ड्स डू द चैंटिंग लाइक द उद्गतर्स, एंड द वेद्स परफॉर्म द एक्चुअल सैक्रिफाइस लाइक द ब्राह्मण्स। Interesting. फैक्ट नंबर 6, वैदिक वर्सेस क्लासिकल संस्कृत। अगर आपने स्कूल में संस्कृत सीखा है तो आपको पता होगा कि संस्कृत काफी लॉजिकल लैंग्वेज है। हर नाउन के जेंडर, I wonder why. What's the class? What's the course that they're having the kids like chant this in Sanskrit here? That's interesting. Like here in the U.S., this is yeah, this is clearly not the U.S. I think even said like British. Yeah, it said some British kids. Yeah, here in the U.S., they're not going to teach anybody about Sanskrit or India or anything like that. So I'm just, it's actually really curious. I kind of want to know why they're being taught that. And why I wasn't taught it, dang it. Why did I have to wait until I was much, much older to start learning on my own? में संस्कृत सीखा है तो आपको पता होगा कि संस्कृत काफी लॉजिकल लैंग्वेज है। हर नाउन के जेंडर और एंडिंग के बेसिस पे उस वर्ड का एक शब्द रूप होता है और हर वर्ब के टेंस के मुताबिक उसका धातु रूप होता है। तो एक शब्द को देखकर आप उसका सब्जेक्ट, एक्शन, टेंस, केस ये सब जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द संस्कृत वर्ड अगमिष्यताम। इसको हिंदी में हम कहते हैं वो दोनों गए होते। इस एक शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसका रूट है गम यानी जाना, इसका लकार या टेंस है रिंग लकार मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका केस है डुअल। एंड सो इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वर्ड में पैक हो सकता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन कुछ लोग संस्कृत को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मानते हैं। बट हियर इज द ट्विस्ट, इस वैरायटी ऑफ संस्कृत को हम कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। वही वर्जन जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था और वही वर्जन जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है। ऋग्वेद की जो भाषा थी दैट वाज कॉल्ड वैदिक संस्कृत एंड वो क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी अलग थी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त के 10वें मंत्र को। इसको वैदिक तरीके से ऐसे पढ़ा जाएगा, आघात गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्न जामि। और क्लासिकल संस्कृत में तानि उत्तराणि युगानि आगच्छन्ति यत्र जामयः जामि कुर्वन्ति। नोटिस कीजिए कैसे क्लासिकल वर्जन थोड़ा फेमिलियर साउंड करता है विद वर्ड्स लाइक कुर्वन्ति या आगच्छन्ति। और हाँ, क्लासिकल संस्कृत में पिच सिस्टम भी नहीं होता। I was gonna say like this sounds more familiar, like the classical it does. I don't know. क्लासिकल संस्कृत में तानि उत्तराणि युगानि आगच्छन्ति यत्र जामयः जामि कुर्वन्ति। I don't know why. Like I feel like from what I've heard, like it sounds more familiar to me. I don't know. नोटिस कीजिए कैसे क्लासिकल वर्जन थोड़ा फेमिलियर साउंड करता है विद वर्ड्स लाइक कुर्वन्ति या आगच्छन्ति। और हाँ, क्लासिकल संस्कृत में पिच सिस्टम भी नहीं होता। वैदिक भाषा एक नेचुरल भाषा थी और Was that wait the pitch क्लासिकल संस्कृत system? में पिच सिस्टम What? Okay. भी नहीं होता। वैदिक भाषा एक नेचुरल भाषा थी और हर नेचुरल भाषा की तरह natural इसमें काफी language, सारे it had irregularities भी थे। 600 BC तक हाउएवर वैदिक संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंशज में कन्वर्ट हो चुका था, जैसे कि मगधी, शौरसेनी, गांधारी। एक एग्जाम्पल सुनते हैं। सच्चम जाणई दट्ठुम सरसम मिजणम मिजुज्जैराओ मरौण तुमं भणिस्सं मरणं विसलाहणिज्जं से निज्जरौ वन्नाणकमं शुद्ध सासयरुवोहं नियत्तु मे संयंसणम् विश्ववर्म सस्त्रेतगस्पुत्रे इंद्रवर्म कुमरे सभर्यये हिमे शरीर परिठवेति
तब के गांधार और आज के अफगानिस्तान में बसे ऋषि पाणिनि ने सोचा कि ऐसा चलता रहा तो संस्कृत तो पूरा विलुप्त ही हो जाएगा। दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि संस्कृत के रूल्स को उन्हें कोडिफाई करना चाहिए, एक फॉर्मल तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ क्लासिकल संस्कृत वाज बोर्न। एक तरीके से ये एक रिकंस्ट्रक्टेड भाषा थी। लेट्स लुक एट सम डिफरेंस Reconstructed. between Vedic and classical. वैदिक संस्कृत में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स बहुत कम थे। Sounds By the way, this like I know I'm not talking much, and typically when I react, I talk a lot, and I try to interject my own like knowledge into it, but a lot of this is new to me, so I'm just trying to focus in on it, right? I'm trying to absorb as much as I can, right? like ढ माना जाता है कि ये साउंड्स द्रविडियन भाषाओं से संस्कृत में आए। सो क्लासिकल संस्कृत में ये साउंड्स द्रविडियन भाषाओं से संस्कृत में आए। सो क्लासिकल संस्कृत में ये काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपने देखा था वैदिक एक टोनल लैंग्वेज है, उस tones and pitches has no tones, में no पिच होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यथा गणानान्त्वा गणपतिग्गु, जबकि क्लासिकल में ये सब नहीं थे। तीसरा, ये थोड़ा टेक्निकल है, वैदिक संस्कृत का विसर्ग दो ऐसे साउंड्स बना सकता था जो क्लासिकल संस्कृत में मौजूद नहीं है। एक को कहते हैं जिह्वा मूल्य और दूसरे को कहते हैं उपदमन्या। These make the sounds ख and फ, साउंड्स जो नॉर्मली पीपल थिंक आर उर्दू और पर्शियन बेस्ड। जिह्वा मूल्य या फिर द ख साउंड तब आता है जब विसर्ग क के सामने हो, और उपदमन्या यानी द फ साउंड वो तब आता है जब विसर्ग प के सामने हो। When a visarga is followed by a pa or pa, it's pronounced as an F sound. For example, Dhiyo yo naf prachodayata. When a visarga is followed by a ka or ka, it's pronounced as a guttural sound. For example, Brahmana Koshosi. एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक में एक ऐसा साउंड था, एक ऐसा वावल जो क्लासिकल में मेंशन तो है बट कभी यूज नहीं होता, एंड दैट वावल इज र। कंफ्यूज्ड? लिसन अगेन, र। इस साउंड को कुछ ऐसा लिखा जाता है, एंड इसे बनाने के लिए आपको आपके टंग को आपके दांतों से जस्ट थोड़ा पीछे रखना होता है। ये पूरे संस्कृत के बस एक वर्ब में आता है, कल्प। फॉर एग्जांपल, दिस चैंट फ्रॉम द यजुर्वेद। सुगंच मे सुपथंच मरुद्धंच मरुद्धिश्च मे क्लृप्तंच मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे। Yep, that's the sound. But fun बात ये है कि ये वावल जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप के कुछ भाषाओं में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्लोवाकियन, by the way, which is different from Slovenian जो हम last time discuss किए थे, there is this sound called kalb, which sounds very much similar to the Sanskrit verb kolb. 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 Wolna kolb. Zbonknutie. Zbonknutie. And Zbonknutie? Kolb. Zbonknutie. 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 I can't speak, man. Like the more I learn about languages, the more I learn about different languages, the more I realize my mouth cannot form these words. And lastly, classical Sanskrit में बहुत सारे loan words Dravidian से आए हैं. A lot of people believe the word puja, for example, formed from the Dravidian words pu plus che. Yeah, I was gonna say, like, it feels like there's a lot of Dravidian loan words in a lot of different places. To do the flower or to offer the flower. क्योंकि वैदिक संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज थी और बस कुछ लोगों को अलाउ किया जाता था वैदिक संस्कृत सीखने के लिए, शायद अगर पाणिनि जी ने संस्कृत को ओपन सोर्स नहीं किया होता तो मे बी हम आज संस्कृत नहीं बोल पाते। फैक्ट नंबर 7, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न संस्कृत। पिछले फैक्ट में हमने देखा था वैदिक और क्लासिकल संस्कृत का सफर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत का सफर अभी भी जारी है। आज की संस्कृत जो यंग लोग बोल रहे हैं वो संस्कृत का एक नया अवतार है। एक्सपर्ट्स इसे मॉडर्न संस्कृत कहने लगे हैं। मॉडर्न संस्कृत क्लासिकल संस्कृत से कुछ अलग है, जैसे क्लासिकल again this is all new to me. वैदिक से कुछ अलग थी। क्लासिकल में भी फिर इसको हम आधुनिक संस्कृत कहते हैं। पहले तो हम लोग कहते थे कि संस्कृत कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। आजकल तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत
classical Sanskrit and modern Sanskrit. एक तरीके से दिस इज संस्कृत 3.0 विद अ फन यूजर फ्रेंडली अपडेट। क्या बदला है, चलिए देखते हैं। पहला, लकारों का सिंप्लीफाइड वर्जन। क्लासिकल संस्कृत में 10 लकार थे, यानी कि 10 टेंसेस थे। 10 tenses? He reads, he read, he will read, let him read, he should read, he has read, he had read, he is going to read, may he read, had he read. There's a form to Read? bless someone, there's a form to say someone must do, but modern में generally people use just 3, present, past और future. Second, He- English के शब्द। अब संस्कृत में काफी सारे शब्द Foreign? Wait. 3, present, past Oh, और future. I guess, okay, Second, yeah. English के That makes sense. I'm thinking about it, yeah, because there were like more words for like things they didn't have in before. Okay. शब्द। अब संस्कृत में काफी सारे शब्दों के लिए संस्कृत वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, बट मॉडर्न संस्कृत में दिस इज काइंड एक्सेप्टेड टू यूज इंग्लिश लोन वर्ड्स। दिलचस्प बात यह है देखना कि लोग मॉडर्न संस्कृत से कर क्या रहे हैं। टेक अ लुक एट दिस। अनंततः सर्वत्र लभ्यते मम शक्तिः केवलं तत् वास्तविकं करोति अभिसरणं विचलनं किम यदि कश्चित् एतत् स्पृशति स्म शापित तकनीक विप्रिय रक्त। Yup, Sanskrit anime. I totally see this getting a lot more popular in the future. Sanskrit में I mean, that's a good anime, so. people have been doing cover songs. एहिरे प्रिया मधुर चन्द्रिकायां नौमिलेव निरस्तस्थले प्रमोदते मना दोलायते मुदाम्बरम् आख्याति मन्मनश्चञ्चलायते नयहे मम हृदयेश्वर माताराङ्गण पारम्। So अगली बार अगर कोई आपको बोले कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, उनको ये बताना कि संस्कृत isn't dead, वो थोड़ी देर के लिए सो गई Just थी। slept And for a now our while. generation can make it wake up back. चलिए, that concludes this level just below the water. Now let's move on to the next level. Again, I probably Fact won't be able number to 8. comprehend most of this. Iran? ईरान। Iran? फैक्ट नंबर 8, ईरान। दोस्त एक ईरान। बात बताओ, जब कोई ईरान मेंशन करता है तो तुम्हारे जहन में क्या आता है? शायद एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, पैराडाइज फॉर डिक्टेटरशिप, बेसिकली नॉट अ कूल प्लेस। देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान इंडिया का यानी कि भारत का मेले में बिछड़ा हुआ भाई है, तो शायद आपका हैरान होना लाजमी है। यू सी, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 630 AD के अरब कॉन्क्वेस्ट से पहले ईरान एक ज़ोरोएस्ट्रियन देश था। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के आज बस 1 से 2 लाख फॉलोअर्स ही हैं, मोस्टली जो इंडिया में रहता है। बट एक टाइम पे ना ये रिलीजन ईरान के 3 महान साम्राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज था। एम्पायर्स लाइक द Achaemenid with Cyrus the Great and the Parthian Empire and the Sasanian Empire। लेकिन ये सब मैं आपको संस्कृत के वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? Well, let's start with the most holiest chant of the Zoroastrians। मुझे बताना कि आपको क्या वाइब मिलता है। यथाहु वेरियो अथारतश अशाचित जायवंगेहश दस्दामनिंगो शौसनिनाम अंगेहश मजदाय शत्रिम चा अहुराय ओयिम Dregobio dadadvastare। ये हैं उस चैंट के लिरिक्स। नोटिस कीजिए हाउ सम ऑफ दीज वर्ड्स सीम एग्जैक्टली लाइक संस्कृत। यथा इज आल्सो I'll be honest with you, I couldn't notice. I tried to listen to it, see what like if I could tell any of the sounds, any of the words or anything, but I think this video is just a step too high for me at my current level of understanding, which I'm not embarrassed to say that I'm not quite understanding things, because you should never be embarrassed to admit that you don't know things or something along that line, right? You should never feel embarrassed by that, and I will gladly say that I'm at that point where I don't know what's going on in the video, right? Man. Well, I should say I know what's going on in the video, but I don't know the context of like this particular thing. Like he's trying to show the Sanskrit words and the Zoroastrian words have like connections because like the whole region was connected back in the day, right? So it makes sense that
the people that they've communicated, they talked, they've intermingled, probably even lived amongst each other, had families with each other, right? It's going to be common for them to share their language, share their words. So that I understand, but like trying to like pinpoint the exact word, I can't do that. I will say though, one thing I've been enjoying is the anime-esque AI artwork. I know I haven't mentioned that up to this point, but yeah, I enjoy that. Yatha in Sanskrit. Vairya is veer or brave. Yatha is also Yatha in Sanskrit. Vairya is veer or brave. Mano is mind. Dadat means to give. This seems like a version of Vedic Sanskrit basically. So इस भाषा को कहते हैं आवेस्ता, जो कि मॉडर्न डे पर्शियन की एंसेस्टर थी, उसी तरह जैसे संस्कृत हिंदी की एंसेस्टर है। जिस तरह संस्कृत में लिखे गए थे वेद, द होली बुक्स ऑफ द हिंदूज, उसी तरह आवेस्तान में लिखा गया था गाथास, द होली बुक्स ऑफ द ज़ोरास्ट्रियंस। जिस तरह हमारा यज्ञ होता है, उसी तरह पर्शियंस हैव यस्ना, जहां वो भी अग्नि की पूजा करते हैं। एंड रिमेंबर कि ऋग्वेद का शुरुआत ही अग्नि जी के वर्शिप से होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि So what you're saying is they're basically, it's exactly the same. They just call certain things differently. सिमिलर कैसे हो सकता है ये सब? दरअसल ये सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ओल्ड पर्शियन और वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के एक ब्रांच से ही बिलोंग करते हैं। स्लैविक बाल्टिक इज अ क्लोज ब्रांच टू दिस। दोनों इंडो इरानियन यानी संस्कृत और पर्शियन और स्लैवो बाल्टिक लैंग्वेजेस लाइक रशियन और यूक्रेनियन में 100 को बोलने के लिए जो शब्द यूज होता है वो श या स से शुरू होता है, जबकि बाकी ग्रुप्स में क और ह से, लाइक किलो एंड 100। इसी रीजन से इन दोनों ब्रांचेस को शतम करके कहा जाता है, अंग्रेजों के लिए सैटम। और ये बस लिंग्विस्टिक्स तक सीमित नहीं था। वैदिक रिलीजन और आवेस्तान दोनों में फायर ही नहीं बल्कि हर उस फोर्स ऑफ नेचर को वर्शिप किया गया था जो लोगों को पावरफुल लगते थे, लाइक थंडर, विंड, रेन इत्यादि। जिस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया था ना 1500 बीसी में, उसी टाइम पे दुनिया के दूसरे छोर में एस्टैब्लिश हुई थी द मित्तानी किंगडम, जो कि प्रेजेंट डे टर्की सीरिया में बसा था। हम पाते हैं कि दे ऑल्सो हैड रेफरेंस फॉर वैदिक गॉड्स लाइक मित्रा, वरुणा एंड ऑल्सो इंद्रा। देयरफॉर यहाँ तक प्री ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और प्री हिंदुइज्म में एक कॉमन नेचर था। ईरान ने तो अपने यूनिक गॉड्स भी क्रिएट किए, लाइक गॉडेस अनहिता और तिष्ट्रिया, बट आफ्टर फ्यू सेंचुरी I'm just gonna say it's a shame that like this really isn't the dominant religion still in these areas, right? Like it's just Islam has come through and swept up and like taken over all of these areas, right? And I'm not saying there's anything bad with Islam or anything, but it's just a shame that we like these stories, these religions are like pushed back and not as prominent. ऑफ स्टेइंग अपार्ट इरान और इंडिया के कॉमन एंसेस्टर्स अपने अपने रास्ते चलने लगे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वेंट विद द अब्राहमिक अप्रोच एंड इट गॉट अ प्रॉफिट, अ सिंगल प्रॉफिट, ज़ाराथुस्ट्रा या अंग्रेजी में ज़ोरोएस्टर। He was the guy Nietzsche was obsessed with, featuring him in the title of his book Thus Spake Zarathustra. Highly recommended, by the way. Zarathustra focused on simple things: good thoughts, good deeds and good words. जबकि हिंदुइज्म में we kept our original pagan nature, allowing for a multitude of new gods and goddesses. हमारी दोनों कल्चर्स में एक कॉमन चीज भी थी, हम दोनों अपने आप को आर्य कहकर एक कॉमन आइडेंटिटी से रेफर करते थे। ज़ोरोएस्ट्रियन टेक्स्ट्स में they refer to their homeland as Aryanam Vaiha, meaning the territory of the Aryas, which comprised of 16 different lands. सुनने में ये काफी आर्यवर्त से मिलता जुलता है, the land of the Vedic people. दोनों जगहों में स्वास्तिका was also a very important symbol, जो कि आज भी हिंदू sacred मानते हैं। It's swastika is important in Persian culture. Yes, it's this motif, the history back to date about. It's a shame that the swastika's image was ruined and tarnished in the West by Nazism. And the thing is, it's not even the Nazi swastika isn't even a swastika. It's a Gamidian, which is the like iron cross. It's actually a Christian symbol that was used, way before, and the name swastika got attributed to it, and now it's in the modern day lexicon that the Nazis used the swastika, but it wasn't the swastika. It was the Gamidian. Anyways. 7,000 years ago.
In fact, do you know that the present day term for the country Iran also comes from the root word Arya? Well, वेदों yeah. में काफी जिक्र हुआ है about this drink called soma. This was a very important part of any sacrifice rituals. और इंद्र को सोमा बहुत प्रिय था. This drink is also mentioned in Avestan. The Iranians called this drink hauma. Soma help करती थी ऋषियों को to connect with the universe. Experts think that this soma drink What is this? Primary source medicinal preparation? Okay. I wonder, did it have like hallucinogenic properties at all? refer to this plant called Ephedra sinica, जिससे मिलता है ephedrine, a kind of Psychological. So it's hallucinogenic. Okay. psychologically active plant. Also, fun fact, this plant in Mandarin is called Sauma Huang, which is still to this date used as a Chinese medicine. Zoroastrians और Hindus में एक major difference ये भी था कि Zoroastrians का supreme god थे Ahura Mazda. Notice how this sounds like Asura. Remember how the Iranians convert Sir to her, Sindhu to Hindu, Soma to Homa. Vedic tradition में Devas were the good guys, जबकि Zoroastrianism में Devas were the bad guys. Indra was name of one such Deva or a demon in Zoroastrianism. In fact, Avestan में legit एक मंत्र है घर के शुद्धि में जो यूज होता है. उसमें स्पेसिफिकली एक लाइन है टू से इंद्र बाहर निकलो, गो अवे. रिसर्च करते हुए आई ऑल्सो फाउंड दैट असीरिया में बकायदा एक सिटी था कॉल्ड अशुर, जहां गेस हु वाज वर्शिप्ड? असुरा, द मेन गॉड ऑफ दैट रीजन. This was located south to the supposed Arya homeland. Could it be that this was the land that the Aryas referred to as the ancient Patal Lok? Asuras वैसे were not considered to be the bad guys all the time in the Vedas. This is accepted by a lot of experts. आपने अपने बुक में लिखा है रामायण रिवील में एक आपने टर्म है जो जिसको हम असुर बोलते हैं. तो इसके बारे में इफ़ यू कैन टेल अस मोर, क्योंकि हमारे मन में असुर का मतलब यही रहता है कि ये राक्षस है, बुरा बीइंग है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग एल्स इन द बुक. तो इफ यू कुड स्प्रेड सम लाइट ऑन दैट. श्योर. सो असुर, देखिए वेदों में अगर हम जाते हैं ना, सो वेदों में असुरत्व मीन्स स्ट्रेंथ. सो असुरत्व जो है वो एक टर्म है विच इज even used for some god. जैसे कभी कभी वरुण को भी या मित्र को भी असुर बताया गया है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये हमें समझ में आता है कि इट वाज नॉट अ प्योरली नेगेटिव टर्म शुरू में. ऐसा लगता है that due to some political clashes. Interesting. I didn't know that either. I've always associated like terms like asura, like as in like wrathful or like full of hatred or bad or evil or something along those lines, right? Like that's from what I've seen in literature and media, that I've always attributed it to that. वैदिक आर्य और पर्शियन आर्यों में कुछ झगड़ा जैसा हो गया and they accepted different gods. The Vedic Aryas stuck to their Indra-based worship, while the Persian Aryas seem to have adopted their Assyrian god अहुरा और अशुरा. बट पता है क्या, ये आर्यों के बीच झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होती आ रही है. As we just saw between Sanskrit and Persian speakers, then we later see between Kauravas and Pandavas, between Punjabis and Haryanvis, and Vedic काल के दौरान between Arya tribes also. जैसा कि हम देखते हैं ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध और the Battle of the 10 Kings, जहां भारत ट्राइब के सुदास के गुरु विश्वामित्र was angry when he was replaced by another priest, Vashishtha. So he helped 10 kings from different tribes to wage a war against Sudas. Sudas won, but instead of humiliating his opponents or killing them outright, उन्होंने कुछ बहुत strange किया. उन्होंने उनसे दोस्ती कर ली and उन्होंने बोला कि the Aryas will start worshipping the gods of the defeated tribes. And maybe that is how Aryas started worshipping idols, something that was a common practice in the non-Aryas. And शायद Interesting. Wow, that's an interesting hypothesis. Is that the correct term? इसी टॉलरेंस की वजह से आज हिंदुइज्म हर किस्म के बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेती है. तो अगली बार जब आप ईरान के बारे में सोचें तो याद रखना कि दिस इज नॉट जस्ट अ मुस्लिम देश, ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन भी थी.
जिसका भारत के साथ एक गहरा रिश्ता है, जहां वैदिक ऋषियों ने यज्ञ आर्किटेक्चर से बनाया सुलभ सूत्रस, द होल फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, एंड ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड मैथ्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो और शून्य। हमारे आर्य बांधव पर्शियंस ने अलजेब्रा और फिलोसफी में पारंगत हासिल की। ऑल्सो द आर्य ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी is common to both Hindus and Iranians. So yeah, maybe we didn't separate on very good terms, but considering that so many Zoroastrians आज भारत के शान हैं, I guess we kinda still embraced each other. And just like that, we come to the end of our level deep waters. And Okay. समय and audience retention को ध्यान में रखते हुए The audience retention. I watched the whole thing. end of our video also. Something tells me कि हम समुद्र तल तक पहुंचे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे facts और What भी happened to बाकी the हैं। Iceberg subtitles? और भी deep जाती है, hiding many more रहस्यमयी facts about the Sanskrit and the Arya people. If that is something you would like to explore, maybe okay. in a part 2, I'm not committing. Let me know in the comments below. Shout out to all our channel members. I'll see you in the next video. All right, well, there it is. Like I said halfway through, like there was a lot of information there that is difficult for me to grasp. Like some of it I understood, some of it I could understand perfectly fine, but there was a lot that I felt like I'll probably need to rewatch the video like 2, maybe even 3 times to fully understand. And of course, I would need to learn more beyond the video, right? Like this is a good like little like tease, a little tantalizing tease for me to try to understand or want to try to understand. I thought the video was good. I felt like the AI used in it, the AI artwork used in it wasn't like super cringy. I actually liked the anime aesthetic to it. It was very appealing to the eye. And then the levels then of themselves were really interesting. There's so many things. Like I didn't realize like how deeply rooted and connected so many languages are. Even like they're in like the Middle East. Is the Middle East? What's that region called? Actually, I don't know. That whole region there, like Iran, Pakistan, Afghanistan, like Syria, whatever. There's so much more connected there in the past that just seems lost now, right? Like everything just seems completely taken over, and like the history, the culture, everything just seems so lost. Good video, very good video, very happy. The video seemed very interesting. I'm gonna have to rewatch this. I'll rewatch it on my own. But yeah, the link to this video will be in the description down below, so make sure to go and watch it. Subscribe to the whole shebang, and I'm gonna read some comments now. Yeah, I'm gonna read some comments. We need a part 2 definitely. It's so awesome to know about our origin language. I don't want the video to end. In Karnataka, we have a village where everyone speaks in Sanskrit. Wow, that's really cool, actually. Take love and Pranan from Bangladesh. Wow, look, 1,000 Indian rupees. Once again, thanks so much for this well-researched and brilliantly put together video. Sanskrit deserves much more love and efforts to bring it back. Your content handles quite respectfully the quench for knowledge of our past heritage and history. Would greatly appreciate it if you can take in detail the topic of Dasranya and its important impact on history and ancient scientific achievements and its relevance post-researching. Yeah, the quench of knowledge, like yeah, the video just makes me want to learn more, and I think that's the when a video is good, when the video makes you want to go out there, question things, to seek out answers. That's what makes a good video, right? And this video makes me want to learn more about it. Bro casually dropped the hardest India edit, and that thought we wouldn't notice. Yeah, that edit at the beginning was great. This is one of the most intriguing videos I've ever watched. Obviously, rooting for part 2. I think more Indian YouTubers should start creating Iceberg videos. I think you're the first one to create a video in Iceberg format. I've seen a lot of English YouTube videos in this format. Yeah, Iceberg is very popular. The Iceberg format is very, 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 very popular. India Today article. There was an illustration done by this person. Oh! This person literally had an illustration in here. This, I'm assuming.
Huh. Interesting. Bro, you just made one of the best videos about Sanskrit and ancient India in general. I wish I could understand more of it. There's so much more that I need to study, right? Goat edit. Sanskrit is the only language which connects India. It's not the only language. Top notch work. Please do a lot more of these. Keep it up. Damn, top notch research. Sir, big fan. Definitely part two. Awesome video. So happy to have a small part of it. Love your content. You missed one fact. The main character feels badass when Sanskrit shlokas are played in the background music. Vedas are actually existing before being written down. They're, yeah, of course, they were passed down verbally for a very long time. Why is the IIP logo so tender-like? It does not go with the IIP brand content at all. Tender doesn't look like Tinder at all. Um, okay. When I saw the notification video from IIP to Sanskrit, Jukaisen was definitely not what I was expecting in it. I mean, it was a surprise indeed. Yes, please make a continuation of this part or this topic. Really love it. Bro, fire came first or Tinder logo? Uh, we need the second part of the video. Such an insightful video. So Arabic conquest basically destroyed a lot of beautiful things. I mean, I kind of said that, right? Like I even said that in the video itself. So it feels like it for sure. Arabic conquest, Buddha's largest. That's how the world used to work, little bro. Everybody wanted to expand their territory. Okay. All right. I'm gonna read some of the new comments. Let's see what's in store for us in the depths of the new. New first, bro. European centric. What? Hulk, please understand the history of India. These days, when animals eat meat and search for food, they are one of the biggest world famous. What the heck is this comment? I'm assuming like the English translation is just botched. Sanskrit is not the mother of Bengali. Waiting for a second part. I was researching about Sanskrit and other Indian languages while waiting for your video part two, and I found it really helpful. I translated it. Oh, cool. Ka and pha are used in Bengali too. Can you make a video on Mana, Shatrapupa, the first man and woman on Earth? I don't know. I don't know what that is. I'll have to. I need to learn more. Anti-Hindus are coming here, I'm sure. I haven't seen very many. $2 super chat there. Awesome. Give me one more part, please. Please, part two. I have to find myself imagining those early days of pre-Vedic age high up on the plateaus of Central Asia. I picture those early settlers newly separated from the fortified cities of the Andronovi-Shintasha culture, embarking on their journey southward. As they ventured forward, they would have seen the imposing silhouettes of Karakoram and Hindu Kush ranges towering against the horizon. Perhaps they wondered what mysteries lay beyond those distant peaks, having heard tales of land called India and the grand city of Harappa, where people kept great horned beast elephants as gatekeepers. But for them, such stories were mere distant echoes. For the last 3 generations, their family of about 20 had lived on this. What is this person going on about? He's making a whole story. I love it. For the last 3 generations, their family, about 20, had lived in the same secluded valley. The men spent their days herding cattle, a lifeline that provided milk and only abundance of the harsh landscape to offer. Meanwhile, the boys tamed wild horses, racing them in breakneck speed across the open brown steppes, with nothing but the azure sky above as their witness. Every so often, saints would visit the remote valley, offering blessings in exchange for mountain grains and milks. But not all villagers were peaceful. Every 5 years or so, the fearsome dragon men, blue-eyed Scythians, with a long-standing grudge against the Androvians, would arrive, taking them with them women and horses. The valley trembled at the very thought of their return, and the eastern nomads, the Proto-Turks, were hardly better. Their raids came like shadows on the moonless nights of Amanavasya, striking terror into the hearts of the villagers.
The village coppersmiths had journeyed forward to the west and returned with what they claimed to be a magical alloy blessed by the fire sages themselves, and known as a divine gift of the devas. With the enchanted metal, he intended to forge a pickaxe, one that combined with the spirit spell taught them by the white-clad saint who dwelled upon beyond the grasslands would surely safeguard them against the adversity. Together, these gifts would, they hoped, guide them for a fate brighter than any man had ever known. This man casually just dropping like some like deep lore that he made in his brain, imagining. I have to find myself imagining, and nobody even liked it. That's the sad part. Like, I think I'm the only person that even read this aside from him. Nobody even liked the comment. Crazy, man. Crazy. The most ignorant seek a group or herd to amplify the ignorance and remain blissful like dogs of the rest. Confucius. Great video, but there's no language called Bihari. Bihar does have many linguists and only one proper language, Mathili. Make video about Aryans and their impacts to influence the whole culture and its diversity. My name is also Arya. Okay. I'm surprised that this doesn't have more comments. Like, we have a couple days ago, 10 days ago, 11 days ago. Then it jumps up to 2 weeks, then it's up to 3 weeks. I'm surprised this doesn't have as many comments. How many comments does it have? Only 2,600 comments. That's actually really, really surprising. Okay. Well, I enjoyed the video. There's a lot that I didn't understand, and I feel like, but here's the thing. Even though I didn't understand a lot of the aspects and parts of the video, I still want to learn more about it, right? Like, it's not stopping me from wanting to learn more. So, yeah. That was the video. Remember to go and check out the channel. And if you liked my reaction, I guess, let me know down below. If you want to recommend any videos, please do. As you can see, though, my my list of videos is upwards of 255. I guess we can take this one off now. Remove to react to. World's first alien temple built in India. That's the next one I'm watching. So. But yeah, if you want to recommend a video to me, let me know down below. And yeah. Anything else, I guess? If you want to talk, if you want to chat, if you want to do a little communication, type up a comment. I'll reply. I try to read every single comment. So yeah, I'm out of here. Take care. Goodbye.